देखिए अभी हमने पहले कन्वर्ट किया था न्यूटन को डाइन में, ठीक है ना। अब हमको कन्वर्ट करना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच इज इन सीजीएस इनटू एमकेएस सिस्टम। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ जी इज गिवन टू यू 6.67 into 10 to the power minus 8 centimeter cube per gram per second square। सेम इसी मेथड को अडॉप्ट करके यू कैन फाइंड आउट द रिलेशनशिप। है, तो जो डायमेंशन हमने निकाली थी जी की, दैट इज यूजफुल। दिख रहा है, -1 इन मास, 3 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। उसी का रेशियो निकालेंगे हम टीजीएस एंड एमकेएस। इसलिए ये वाला डाउट है इसमें। अब देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन है to check the dimensional consistency of a physical relationship। सपोज करो कल कोई नया साइंटिस्ट है, लेट्स से अनुष्का है, ठीक है ना, शी इज न्यू इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड शी proposes a equation that length of something of his room is equivalent to the speed of the car which is running in front of his house, ठीक है, divided by the area of the particular state in USA। अब उसने कोई कोई भी ऐसा रैंडम फार्मूला दे दिया, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ जोक आई एम सेइंग कि ऐसा कुछ भी प्रपोज इक्वेशन आ गई। नाउ हाउ वुड यू नो दैट दैट इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट?
ठीक है, शी इज अ साइंटिस्ट, शी हैज डन ऑल हर स्टडीज, उसने भी बीटेक किया है, एमटेक किया है, रिसर्च किया है, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च किया है, एंड शी गिव्स सम इक्वेशन. So the other persons in that scientific community will not accept whatever Anushka has told directly. They will try to analyze, to check, they will check the consistency. So without actually performing the experiment, what they can do is they can check whether the equations are, the terms in the equations are dimensionally consistent or not. Now, if let's say there are two, three terms, yeah, this is known as principle of homogeneity of dimension. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, ये ध्यान से समझना. ठीक है, अगर सपोज करो कोई तुम्हें ऐसा कहता है, ठीक है, कि मेरे घर में जो अभी पकोड़े बन रहे हैं उसका मास है दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द रूम ऑफ रूम नंबर 203 ऑफ अलकापुरी आश्रम ब्रांच प्लस स्पीड ऑफ द कार बीइंग ड्रिवन बाय अभिषेक जोशी प्लस और माइनस समथिंग and maybe the area of some place. तो अब तुम देखोगे यहाँ पे यू आर एडिंग एप्पल विद ऑरेंजेस टू गेट बनानास. ठीक है, यू कैन नॉट ऐड 2 apples to get bananas or 3 apples and 5 oranges to get pineapple. If you are writing an equation which involves terms, then equation or adding or subtracting will only work if they are of the same dimensions. ये बात समझ में आ रही है? The dimensions have to be same. If the dimensions are not matching, that means the equation is physically incorrect. Okay? If the dimensions of the terms in a given equation they are not consistent with each other, they are not matching, then the equation is definitely physically incorrect. सारी बात समझ में? तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं. x is related with a with square of bcn square root of def. So dimension of x should be same as dimension of A, should be same as dimension of should be same as dimension of इन तीनों के डायमेंशन मैच होने चाहिए. अगर ये मैच नहीं हो रहे हैं चारों टर्म्स के, then this equation is definitely incorrect. आई बात समझ में? ये बात समझ में आ गई सबको? दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन. ठीक है, लिख दो इसे.
So let us say somebody proposes this equation f is equal to mv square by r square. Okay. So if you calculate the dimensions of RHS and LHS separately, dimension of forces, one in mass, one in length, and minus two in time. When you calculate for the LHS, it is one in mass. For square of speed, it will be two in length and minus two in time. And then you have this one. Now when you see the dimensions of LHS and RHS, they are not equal. If the equations के dimensions, your terms के dimension अगर match नहीं कर रहे हैं, that means you are trying to add or equate apple with oranges, which is an incorrect one. That means this equation is physically inconsistent. ये बात समझ में आ गई? लिख लिया ये सबने? Now here is the second equation where you are given the relationship S is equal to ut minus half at square. Now if you calculate the dimensions of S, ut and half at square, these dimensions, okay, are equal. You can see that dimension of S is length, 1 in length, dimension of ut is also 1 in length, dimension of half at square, half has no dimension, so at square, it is again L. So here you can see that the three terms are dimensionally consistent. You are trying to add and subtract and equate. So although this equation is dimensionally consistent, but it need not be physically correct, because we know that physically correct equation is S equal to ut plus half at square. So the positive test of this analysis is not confirmatory. Equation may be physically correct. You can say equation can be physically correct, maybe. But if dimensionally it is inconsistent, then it is definitely what? Physically also incorrect. ये बात समझ में आ गई कि नहीं? Yes, sir. तो आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन है, आई थिंक यू मस्ट हैव सीन इट.
ये किया किसी ने? Yes, sir. Yes. तो क्या Yes, रहा है? sir. It डायमेंशन is dimensionally correct. करेक्ट है? ठीक है. Sir, it is dimensionally, physically both correct. Physically, how can you say that it is correct? Sir, because T is equal to T, it Dimensionally consistent है, that is okay. But how can you be sure that it is also physically correct? तुमको पता है ये 2 पाई होता है या 4 पाई होता है? ये अंडर रूट 37 होता है, पता है क्या तुम्हें? नहीं पता है ना? So right now, based on the knowledge that you have not done the derivation of time period of a simple pendulum, but you can say that this is, अगर suppose for a धनराज ने ये equation दी है, the time period of a simple pendulum which is oscillating with small oscillations, उसका जो time period है वो length पे depend करता है, mass पे depend नहीं करता. So he gave that equation. So looking at the equation now, you can say it is dimensionally consistent. ठीक है? So dimension of time period will be what? 1 in time, and dimension of 2 pi under root of L by G, that is LHS. तो 2 pi का तो डायमेंशन कुछ नहीं होता, इट्स अ प्योर नंबर. L का क्या होता है? 1 in लेंथ, और ये अंडर रूट है इसलिए मैंने हाफ लिख दिया. और G का कितना है? M, सॉरी, L T minus 1. इसको सॉल्व करोगे तो ये भी 1 in time आएगा, which basically means that LHS and RHS, they have same dimension. So you can only say at this stage that this equation is dimensionally consistent. Physically correct है कि नहीं मुझे पता नहीं. आगे समझना. Right now you cannot comment on physical correctness. For physical correctness you have to perform experiment, but you should know the derivation. इतना सबको क्लियर हो गया? excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा. Sir, आपने नीचे L into T -1 लिखा है. -2 है, सॉरी. हाँ सर, -2 आएगा. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज -2. एकदम सही बात है. क्लियर हो रहा है ना अभी इसके सारे एप्लीकेशन? एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो बेटा. 2 पाई कांस्टेंट है, मतलब डायमेंशन जैसे इसमें. हाँ, नंबर का क्या डायमेंशन होता है? ऑल डायमेंशन. तुम बताओ क्या डायमेंशन होगा नंबर 2 पाई का? डायमेंशनलेस. यस, इट इज डायमेंशनलेस. Now this is the most important thing. ठीक है, especially useful for those students who do not want to work hard without doing the research, all the experiments, and I'm just joking. Without doing the actual experimental setup, you can somehow find the relationship between the various physical parameters using dimensional analysis. ठीक है, देखते हैं. This is very interesting. इसको लिख लीजिए.
देखो लिखिए सपोज करो you assume that you are trying to find out the time period of a simple pendulum, and what you can do is you can change various parameters associated with it. Okay, so let us say you have suspended, this is the ceiling, इस ceiling से तुमने एक simple pendulum को arrange किया, ठीक है. So this is the point of suspension, यहाँ पे suspended है और ये यहाँ पे oscillate करेगा, ठीक है. यहाँ पे एक छोटा सा बॉब है. What will happen is that you want to rotate it. तो ये अभी इधर है, मैं थोड़ा सा रोटेट करना चाहता हूँ, ठीक है. तो ये ऐसे रोटेट कर रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा. कुछ टाइम के बाद में इधर जाएगा, फिर वापस इधर जाएगा. समझ में आ रही बात. तो दिस इज व्हाट यू कॉल इट एज रोटेशन. तो ये ऐसे SHM कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो बेस्ड ऑन दैट व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑन व्हिच it will depend on length L, it will depend on the mass, it will also depend on the acceleration due to gravity G. ठीक है. तो you assume that on these three factors it can depend. What can depend is of oscillation. ठीक है, समझ में आ रहा है. टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज T. तो ये रिलेशनशिप तुम कैसे निकालोगे. ठीक है. तो व्हाट यू विल अज्यूम इज दैट दिस टाइम पीरियड T is proportional to L की पावर A, M की पावर B and G की पावर C. We do not know what are the exponents of these terms, but ये इन variables पे depend कर सकता है. And we are also assuming that the constant of proportionality is dimensionless. So there is a limitation that this method will work only if you are dealing with a condition where constant proportion नहीं. तो ये लिमिटेशन है इसकी, इसी कंडीशन में ये वर्क करेगा, ये ध्यान रखना. If I remove this proportionality sign, I have time period T is equal to some constant K, proportionality constant, which is dimensionless, L की power A, M की power B and G की power E. Okay, now if this equation were to be physically correct, then it should be dimensionally correct also. That means dimension of time should be same as dimension of length to the power A, dimension of M to the power B and dimension of G to the power C. इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, इसलिए मैं इसको आई एम नॉट राइटिंग. Now what is the dimension of L? Length, 1 in length. What is dimension of mass? M, 1 in mass. What is dimension of G? L1 T minus 2. तो ये आएगा. Now you have dimension of time period as 1 in time. LHS RHS दोनों के डायमेंशन लिख दिए तुमने. इसको तुम क्या लिख सकते हो. डायमेंशन ऑफ L is A plus C, dimension of M is B, dimension of time is 2C. Now from here you can see that dimension of M is 0, dimension of L is 0, dimension of T is minus 1. So if these two terms were to be dimensionally correct, तो उनकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. तो तुम्हारा B का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया.
B is what? 0. L is A plus C. A plus C is also 0. And minus 2C is equal to 1. Or you can say C is equal to minus half. So from this A will be plus half. Now you can substitute the values in this equation again. The time period is some constant K times L की power A, which is half, M की power 0 and G की power minus half. ठीक है ना? So the time period is equal to some constant K under root of L by G. Did you understand the method? हमने assume किया that time period is proportional to length as well as mass as well as G. इन तीन फैक्टर पे वो डिपेंड कर रहा है. ऐसा assume किया और फिर हमने इसको सॉल्व किया. So applying the principle of homogeneity to the proposed equation, now we have this relationship, which actually matches with that of the physical relationship. So जब तुम SHM पढ़ोगे, simple harmonic motion पढ़ोगे, then you will come to know that for small oscillations, this time period is given by 2 pi under root of L by V. तो अब तुमको क्या करना है? Without doing the actual experiment, you could find that ये relationship है. अब तुमको सिर्फ K find करना है. तो वो तुम easily 4-5 observations लेके भी कर सकते हो without actually applying any of the knowledge of physics. कोई derivation नहीं apply किया, कोई law apply नहीं किया. Simply purely on the basis of dimension analysis, you can find the relationship. So it is acting as a assistance of your research tool. ठीक है, ये मेथड को ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है ऊपर.